स्कूल फाउंडेशन ब्लॉक ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। जी हाँ, स्कूल एक ऐसी जगह है जो आपको आपका फ्यूचर ब्राइट करने में, आपको नॉलेज प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका जो है वो निभाता है। तो जी हाँ, वेलकम टू खबर समय। कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल के साथ में मैं मालविका सुराना फ़िलहाल आ चुकी हूँ DPS सिलीगुड़ी, जो कि दागापुर में लोकेटेड है। यहाँ पर हम आए हैं बिकॉज़ यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। बता दें कि DPSSMUN इसका फुल फॉर्म अगर मैं बताऊँ तो DPS सिलीगुड़ी यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी यहाँ पर MUN कंडक्ट कर रहा है। MUN इज़ मॉडल यूनाइटेड नेशंस। ये एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है जो सिलीगुड़ी में पहली बार कंडक्ट किया जा रहा है। इसकी ओपनिंग सेरेमनी किस तरह से की जाती है, ये है क्या स्पेसिफिकली, इसके बारे में हम ज़रूर आपको बताएंगे। और यहाँ पे किस तरीके से जो है ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, कैसे ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पे की गई, इसी के साथ में बता दें कि 3 दिनों का ये चैम्पियनशिप यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है। यानी कि 10th, 11th एंड 12th को यहाँ पे जो है चैम्पियनशिप होने वाला है। तो आपको थोड़ी सी ही देर में हम ज़रूर दिखाएंगे कि किस तरीके से जो ओपनिंग सेरेमनी है वो किया गया, साथ ही साथ चीफ गेस्ट कौन आए, इसी के साथ किस तरीके से जो परफॉर्मेंसेज है स्टूडेंट्स ने वो दिया। प्रिंसिपल मैम से भी ज़रूर बात करना चाहेंगे और आपको इस पूरे इवेंट की तमाम तस्वीरें जो है या तमाम जानकारी जो है वो हम आपको ज़रूर देंगे। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं इवेंट की ओर। Good morning and a very warm welcome to our honorable chief guest, Colonel V. Shankar. Thank you, sir, for accepting our invitation. Sorry, Secretary. So, Provisy DPS Siliguri, Sheriff Agrawal. Due to his vision, we all are here on this platform, sir. But he always works day in and day out, 24/7, 365, and whenever this kind of event taking place, he is behind the curtain. So, a very big thank to Sheriff Agrawal, sir, Director DPS Siliguri. A big round of applause for all this distinguished duration of this DPS 1. Mrs. Manwara D. Ahmed, Principal DPS Kulbari, big round of applause. Principal, Surendra Institute of Engineering and Management, Dr. Nagarajan Sudarshan, Mr. Sukanta Ghosh, Vice Principal, DPS Siliguri, all distinguished guests, Secretary General Sarthak Oja, behind this one, and one coordinators. You to the first DPS Model United Nations Conference 2022. Indeed, we are all standing in the shadows of greatness today because it was here in this very hall that DPS Siliguri had hosted its first conference of IMEN in 2015. DPS MAN Conference 2022 is the first of its kind in West Bengal with a whooping 461 delegates. So a big round of applause for all of you children from different places like Nepal and Farakka. The event was envisioned by our Honorable Director, Mr. Sheriff Agrawal, who encouraged the concept of hosting DPS Siliguri's inaugural MAN Championship for its students in MAN aspirants from across and beyond the nation. His steady endeavors and enthusiastic support empowered the idea and manifested it into reality. तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इनॉर्गरेशन होने वाला है, ओपनिंग होने वाला है ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी मॉडल यूनाइटेड नेशंस। जी हाँ, लाइटिंग ऑफ लैम्प फ़िलहाल यहाँ पर जो है किया जाएगा। बता दें कि चीफ गेस्ट कर्नल वी शंकर द्वारा जो है ये लाइटनिंग ऑफ लैम्प किया जाएगा। उनके साथ साथ और भी गणमान्य व्यक्ति जो है वो यहाँ पर उपस्थित है। जितने भी स्कूल्स यहाँ पर आए हुए हैं, बता दें कि उनके प्रिंसिपल्स भी यहाँ पर अपने बच्चों के साथ में आए हैं।
डीपीएस दागापुर स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा भी जो है यहाँ पर लाइटनिंग ऑफ लैम्प किया गया। इसी के साथ और भी गणमान्य व्यक्ति जो है यहाँ पर उपस्थित है। डीपीएस फुलबाड़ी के प्रिंसिपल के द्वारा भी यहाँ पर जो है लाइटनिंग ऑफ लैम्प किया जा रहा है। बता दें कि डीपीएस सिलीगुड़ी द्वारा मन जो कि है मॉडल यूनाइटेड नेशंस चैम्पियनशिप 2022 यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। बता दें कि 10th to 12th ऑफ नवंबर तक ये चैम्पियनशिप यहाँ पर होगा। इसी के साथ में हम आपको बता दें कि फ़िलहाल के लिए हम खड़े हैं डीपीएस दागापुर में, जहाँ पर ये जो चैम्पियनशिप है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। आगे की और जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे। बता दें कि यहाँ पर जो है चीफ गेस्ट को ऑनर किया जा रहा है। उन्हें मोमेंटो, बुके और खला के द्वारा जो है सम्मानित किया जा रहा है। हमारे साथ में MUN जनरल सेक्रेटरी मिस्टर सार्थक यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे ज़रूर बात करना चाहेंगे एंड MUN के बारे में थोड़ी और जानकारी जो है वो हम भी लेंगे और साथ ही साथ में आपको भी बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू खबर समय एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much, ma'am. I am the Secretary General for this MUN. My name is Sarthak Ojha, and I just graduated from DPS Siliguri this year. And also, the model UN that we are simulating, it's here on 10th, 11th, and 12th of November. And yes, we are just getting on with it. We just ended the opening ceremony. Okay, so I would want to know ki what is MUN according to you? Right. So a model UN is basically a simulation of the United Nations committees. What we try to do is that we try to enact the United Nations committees, and at the same time we try to go beyond the entire diaspora and we try to enact Indian committees as well. So ma'am, यहाँ पर committees बहुत ही एक diverse range की होती हैं. यहाँ पर committees ऐसे भी होती हैं जो United Nations human rights को discuss करती हैं और साथ में वो general affairs जैसे disarmament और international security पर भी वो discussion करते हैं during the MUN. There are 11 such committees in our conference, and yes, so basically delegates जो यहाँ पे आते हैं, the participants, they are going to represent a country. Let's say I am representing the United States of America, and I will be representing the United States policy and also be speaking about the entire debate and discussion, let's say on any of the given agendas of the committees. तो यहाँ पर कह सकते हैं कि स्कूल अगर इस तरीके का जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज करता है, उससे स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलती है ताकि फ्यूचर में जाके दे कैन बिकम मोर कॉन्फिडेंट, मोर उनकी वोकेबलरी जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। साथ ही साथ और भी ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट इंक्रीज़ कर सकता है एंड अपने आप को और ज़्यादा बेटर वर्जन बना सकता है ताकि आगे जाके इन फ्यूचर कहीं ना कहीं ये सब चीज़ जो है वो उनको हेल्प करे फॉर देयर फ्यूचर। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? राइट मैम, आई मीन मैं पर्सनली खुद 6 सालों से MUN कर रहा हूँ और MUN ने ना ही सिर्फ मुझे मतलब डिबेटिंग और पब्लिक स्पीकिंग पर एनहांस किया है बट ऑल्सो एट द सेम टाइम उन्होंने मुझे डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन सिखाया। उन्होंने सिखाया है कि कैसे मैं लोगों से जाके इंटरेक्ट कर सकता हूँ इन अ बेटर मैनर, कैसे मैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ लर्न कर सकता हूँ. हाउ कैन आई लर्न हाउ टू डिबेट एट द सेम टाइम while not hurting the sentiments of anyone else. We know that a lot of problems exist in the world today, and how we can solve it as the global youth is something that MUN teaches us. The public speaking, debating, these are just the byproducts of MUN. But the main idea is that we learn diplomacy, negotiation, we understand human rights, we understand disarmament, international security, all these given agendas. And as the global youth, we present solutions to the issues we face at hand. And that is why I think MUN holds such an important place in the world, or I mean in our own town today. थैंक यू सो मच, इट वॉज़ रियली नाइस टॉकिंग टू यू. तो इसी के साथ में हमने बात किया जनरल सेक्रेटरी मिस्टर सार्थक से. It's an honor to be here as well as a great nostalgic memory because I spent good about 3.5 years here in Mount Dobra and Siliguri. So it's homecoming for me. You're all excited to get on with the show. So I'm not going to be standing between you and what you're going to do. But thank you for the introduction. And I'd like
which will come in handy for you when you do your model UN. Alright? So we can go next. Next. Alright. I started my journey in uniform by being a Boy Scout. Anyone Boy Scouts or a Girl Guide here? And that's what we all need to be now, since you're getting into the model United Nations. You need to be prepared. You need to practice yourself, because it's a great platform where you can hone your public speaking skills, your negotiation skills, your conflict resolutions. So you need to be prepared. And prepared means you need to do your research well, you need to come well in time, and things like that. And that's how I began my career in uniform, by being a Boy Scout and being prepared. But then I moved on to the next. I moved on to an institution called the National Defense Academy. Anyone knows where it is? Yes? Pune, that's right. And incidentally, National Defense Academy's motto and the DPS motto is service before self. And day in and day out, this is what was taught to us, that it's important for us to place service before self. And similarly, children across the schools from here, Farakka, Nepal, across Siliguri, you need to place service before your own thing. So that will only take you ahead and help you achieve what you want to achieve in your life. Next. And the important lesson that I learned in National Defense Academy is one of the important events at National Defense Academy is called the cross country, where a group of people run from a place to another place. It's about 50 odd kilometers, and the results are combined by how fast everyone who participated finishes. It's not about how the first person finishes. So teamwork is very, very important. And in MUN, teamwork is very important. It's not about one bright spark trying to put across his or her views. It's important how you consult with your team, how you consult with the other delegates, how you consult with the other countries, and come up with a resolution. It's important. And that was my learning from the National Defense Academy, where day in and day out, we were taught how teamwork is important and how the harder right is important than the easier wrong. Wrong is always easy, shortcut is always easy. But every day in our prayer, we should talk about the harder right, which is the easier wrong, which is very important for children of your age group, delegation. But how you do your research is important. Harder right will always get you to a better destination. Of course, it's going to be harder. Next, Kashmir. Like any other young officer, I moved to Kashmir in 1998. Next. And this place, where you saw the picture earlier, that was at 10,000 feet. Anyone been to Kashmir here? Oh, that's good. That's good. Wonderful. Are you all Fauji kids? Some of you are Fauji kids. That's why you've been to Kashmir. All right? But it's a lovely place to go. And that's when I was posted. I was at about 10,000 feet. And we got information that some terrorists have come over. And we had to move to another place, which was 13,400 feet. In the month of July, it was snow. A little very less experience. I had just about a year of experience. And next, we participated in an operation where, if you see the blobs, the terrorists were holed up. After 3 days of not eating anything, we just had water to drink. Young boy, next. And we killed 13 militants. And you saw a lot of claps. But it's not about killing those 13 militants, which is more important. What was more important was the complete operation. We didn't have a single scratch in any of my troops. And that is what is more important. It's not about killing the 13. And how did that happen? Next. It's happened because we believe in the army that the more you sweat in peace, the less you will bleed in war. And what we you have to come up and express your views, whether it's on climate change, whether it's on poverty, whether it's on hunger. You are the future. And that's why you need to make service before self. You need to serve to lead. Next. Alright. I believe hobbies make a man, and that's how I got to meet him. And the other aspect, which is the last two aspects that I want to bring out to you in MUN, Dhoni has been a very important for all of you, which I want to pass on to you, is because in MUN, Secretary General will hold me true, isn't it, Roja? That it's important for you to consult and
and not have a fighting mentality. You need to come to a resolution. It's important to come to a resolution. We're not doing economics. We are coming to a resolution to maybe have equality, we need to have climate change, we need to have education. Your points, believe in the process of research, what you have done till now, rather than just thinking that this is the right way to go about it. So it's important. Control the controllables is you can only control what you can speak, what you can put across. You cannot stop the principal man from saying what she wants to say, or the Secretary General coming and saying something else. So remember, this is an adage which I learned from MS Dhoni. Next, and because of which I was there in 2011. Unfortunately, I can't be there in Australia this time, but hopefully, and that's how we were there on the day we won the World Cup. Next. Oh. There's something fluttering here. What's that? The lives of the country. And that's so important. Can I have this? Someone can help me out? With my Secretary General started. What's your name? Hello. Okay, which school? TPS Siliguri. My name is Arshi and I'm from TPS Siliguri. All right, Arshi. Round of applause for the three of them. Sometimes you have a lot of colors in your life, all right? So maybe you can take this, you can take this, you can take this. Three individual colors, individually, they're just nothing. Just as empty as this, all right? But it's important if they have teamwork and they can combine each other, maybe to have some kind of a relevance to us. So maybe I'll take this color, put it in this, maybe take this color, put it in this, you can see, and you can put this color. Three individual colors, put in this, which doesn't have any relevance. But if you do the right process and the right words, maybe it will have some relevance. And what would be the right words? All I would say, because I was in the army, I will say Bharat Mata Ki and you will say Jai. Alright? Bharat Mata Ki. Jai. Mata Ki. Jai. रियल लाइफ हीरोज़ के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन जब बात रियल लाइफ हीरोज़ की आती है तो कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जाते हैं, हम लोग नहीं पहचान पाते हैं कि कौन रियल लाइफ हीरोज़ है। तो प्रेजेंटिंग हियर कर्नल वी शंकर जी हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे ज़रूर बात करना चाहेंगे। विल टॉक विद द हीरो हिमसेल्फ। वेलकम टू खबर समय सर। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी लग रही है कि मैं आज सिलीगुड़ी में ये DPSS मुन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और खबर समय के साथ बातचीत हो रहा है। थैंक यू सो मच सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे मॉडल UN के बारे में? लाइक व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? Model union is a very good way to groom youngsters to understand how to do public speaking, how to do conflict resolution, how to understand the world's problems. And this provides a good platform for them. और यहाँ बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो टीम वर्क एक चीज़ है जो सीख सकते हैं, प्रिपरेशन कैसे करना है, नॉलेज कैसे गेन करना है और बाकी लोगों से मिलजुल कर कैसे एक समस्या का हल ढूंढना है। तो यही मुन का एक मकसद है। एंड आई थिंक ये बच्चे सिलीगुड़ी में इनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट बार ये DPSS में हो रहा है, तो आई एम श्योर इट विल बी अ गुड थिंग। सर कह सकते हैं कि टीम वर्क कैसे करना है, कैसे खुद के साथ साथ एक कम्युनिटी को आगे लेकर जाना है, दीज ऑल आर द टॉपिक्स वेयर MUN टचेज। हाँ बिल्कुल सही। विदाउट टीम वर्क कुछ नहीं हो सकता है। हम यही सोचते हैं कि अकेला कोई जगह नहीं जा पाएंगे। खासकर जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है आर्मी में, फ़ौज में, हमें हमेशा टीम वर्क सिखाते हैं और खासकर हमारी ट्रेनिंग के दौरान टीम वर्क का बहुत महत्व दिया जाता है।
तो बिना टीम का कुछ नहीं हो सकता है, और ख़ासकर यूएन जैसे जिस ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ सभी को मिलजुल के कोई ना कोई समस्या का हल लेके आना पड़ता है, तो टीम वर्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सर, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ, सिंस आप एक स्कूल में आए हैं, व्हाट इज़ दैट वन मेमोरी यू मिस ऑफ योर स्कूल? मेरा स्कूल का मेमोरी टीचर्स एंड फ्रेंड्स हैं। हम कम शरारती थे तो मगर हम चेन्नई के रहने वाले हैं एंड प्राइवेट स्कूल में गए थे, तो वहाँ हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिला था, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिला थी जो हमें परस्यू करना था, हॉबीज़ हो या एक्स्ट्रा करिकुलर हो या कोई को करिकुलर हो, और एकेडमिक्स में भी ध्यान दिया जाता था। तो वो चीज़ और ये सब विदाउट प्रेशर था, तो वही चीज़ मैं मिस करता हूँ। विदाउट प्रेशर कैसे एंजॉय कर सकते हैं? तो आपके अंदर का जो चाइल्ड है वो बाहर आता है कहीं ना कहीं आप जब स्कूल में आते हैं। हम तो अभी भी चाइल्ड ही है। थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। एंड आपसे एक बच्चा भी बात कर सकता है एंड कोई बड़ा भी आके आपसे बात कर सकता है। यू आर टोटली फ्रेंडली विद ऑल ऑफ देम। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर। Take this short moment and thank all the teachers who are present here for making us the people we are today and for making us the individuals we want to be in the future. And without the support of the teachers, I feel this growth maybe someday it would have happened, but not at this age. They make that possible, and that is why our teachers are a lot like our parents. It's just away from home, and they make our schools feel like a home away from home. With that, we also have a young teacher with us, a young leader with us, who is going to take the charge for this entire conference. And it is my utmost pleasure because I have seen this person grow right from his first MUN, and now he's standing here as the Secretary General of North Bengal's largest MUN. And with that, I guess there's not a lot I have to mention about Mr. Sarthak OG Oja, as he refers himself, and the circuit also refers himself as Mr. OG. I would like to call upon Sarthak and declare the conference open, as well as with an immaculate speech as always. And can we please welcome this young man with a thunderstorm of applause as well? A trembling kid dressed in his first suit, his first placard, his first phone entered the premises of a school campus only to discover that he will meet his best friend again, the microphone. The kid had always been a fan of speaking into the mic and found excuses every week to do the same. From assemblies to debates, from prayers to arguments, the kid had microphones always go with him, hand in hand. This time around it was different. The microphone was passed around, and you could only get it if you dared to speak up for a nation. All of us, at some point of time in our lives, defend our peers. How many people have you raised your voice for? Most of us speak for a certain sect or a group, and some of us go years and years without standing up for anyone, for probably millions and millions of people. While some of you might be diplomats for nations going through the world's grimmest crises, a host of you might be representatives of the political parties of the biggest democracy of the world, while some judges at the apex court of the globe. Some executives who plan the future of India, and some eminent press correspondents. Members of 450-member congregation, this is the call for you to become future leaders for a sustainable world, just like our motto asks you to. Good morning, everyone. Good morning to Mr. Karnam Gandhi. Thank you so much, sir, for that immaculate speech. Principal of DPS Siliguri, Mrs. Anisha Sharma. Vice Principal, sir, Mr. Shukanta Ghosh. Pro Vice Chancellor, ma'am, Mrs. Kamlesh Agarwal. Principal SIEM, Dr. S. Nagarjan Sudarshanan. Principal DPS Fulbari, Mrs. Manwara Begum. Director, sir, Mr. Shah. Let me tell you a story before, especially when your ancestors had been shipped away to a country and your last name is that of a slave owners. How can you say that? How can you have that mentality? I always felt like I could do everything. That's what people are controlled by. They are slowed down by their own perceptions of themselves. Best at age 26. A 15-year-old kid looked in awe as
Kanye went on and on in the BBC interview, I knew in me that all I needed was a little push as well. Today, later too, I see Kanye, my hero, for once, now is accused of anti-Semitic dialogue and the issue at hand. Today is the day you let go of all your inhibitions and the next step in public speaking, diplomacy, deliberations and debate. I welcome everyone to push their foot against the accelerator, put your pedal on the pedal and conquer the best version of yourself. Yeah, this conference open. We lit upon fire without any delay. A band which I was a part of back in 2016 and 17, and now seeing the youngsters who are here, introducing to you the rocking band of DPS Siliguri, the Celestials! As I said, it's going to be a groundbreaking performance, and with their energy, I want each one of you to show and reflect that same amount of energy, that same amount of vigor that they are going to bring in this entire performance. And that's not the end. The best thing about Celestials, and I personally am proud of this, and to mention this particularly, so you'll see new faces, you'll see new musicians while the music is still on, and while the performance is still on. DPS Assemblyman, are you excited for the performance of the Celestials? Over to you, the Celestials. Thank you so much. Just bringing me out the blood.
Sonakshi for that amazing performance. Almost felt like Adele was herself on the stage. And I believe no one will disagree to that. Is there anyone who didn't like the performance of Sonakshi and the Celestials? So here we go. हमारे साथ में फ़िलहाल डीवा एंड मिस्टर वरुण यहाँ पर मौजूद है, जो कि MUN यानी कि मॉडल UN के मेंबर्स यहाँ पे हैं। हम इनसे ज़रूर बात करना चाहेंगे। वेलकम टू खबर समय। Thank you so much. Hi, I'm Diva. Pleasure to be here, I'm Varun. तो क्या कहना है आप दोनों का, या फिर व्हाट इज़ योर टेक ऑन मॉडल MUN? I personally think that there are some stereotypes related to these MUNs, that they are very hard and they're difficult and you have to be an accomplished individual to participate in one. I would say that I was once a very timid kid, right? And these MUNs are the reason that I'm here today. These MUNs help you become an accomplished individual. Thank you. आपका? Likewise, I think since the majority of the audience of Khabarsamay is Hindi, I'll use my mother tongue. So, हम सब एक बहुत ही privileged घर पे रहते हैं. We are living this life. तो मॉडल UN एक कॉन्सेप्ट है
जो यंग बच्चों को मोटिवेट करता है कि आप जाने कि आपके अराउंड में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, बिकॉज until and unless you yourself are an informed citizen, you can't make choices, right? And that is why it is extremely important for the kids of today who will be leaders of tomorrow to go ahead and understand the intricacies of global politics, knowing the issues around what's happening. So at that point of time, when they take over the world, we'll be in a better place. And I think the Indian education system today mostly focuses on theoretical knowledge, right? Well, this introduces us to a world we are not usually very familiar to. It tells us how to be diplomatic, how to behave in front of the world, how to get what we want while being diplomatic, right? This concept has introduced so many new things into an individual's mind, right? It's helped all of us a lot. एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि हाउ हैज़ बीइंग अ मेंबर ऑफ MUN हेल्प्ड यू इन योर पर्सनल ग्रोथ. लाइक आप एक्सपीरियंस बता सकते हो फ्रॉम योर फर्स्ट मीटिंग टू अभी जब आप यहाँ पे हो. Of course. I was a very scared kid. My first MUN, in fact, it was the first place I felt very out of my comfort zone. It forced me out of it. I did not speak at all. I did not win anything. But as much as I was discouraged, the seniors there, they helped me, they talked to me, they helped me understand my potential, right? So it is not always about winning the award. It is also about meeting new people, understanding what is right for you, and making an environment that will help you become successful. Likewise, I have a similar story. So actually, Model UN auditions were going on, and the teacher suggested me because I was speaking a lot in class, right? So from that moment to right now, where I'm chairing a committee, it has been a really great journey. I think that helped me not only in my job interviews, but also going ahead and cracking, having a conversation with anybody. I now feel confident enough in speaking in front of 5,000 odd people, right? And I think it all stemmed back at that very moment when I decided to pick up the microphone for the first time and decide that yes, I can do this. And that's what it takes for you to decide that yes, I can. These MUNs empower you in general. Right now, I am the only female secretariat member in the senior secretariat, right? And that makes me very proud. ओके तो एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि सिलीगुड़ी में फ़र्स्ट टाइम ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, तो आपको क्या कहना है यहाँ के स्टूडेंट्स को या फिर यहाँ के लोगों को? I think these concepts are only talked about on social media. People don't generally know about them. So now that they are participating, now that they are experiencing it personally, they have come to know so many things. These past recent days, because of the pandemic, we could not interact with our juniors a lot. But because of these MUNs, we have gone to so many different schools. We've met so many new people who now are our closest friends. Why? Because I'm a mentor to some of them, right? And while I was a kid and I was learning from people like Varun Bhaiya himself, there were some things I wanted to keep in mind. Ki if one day I get to do it, I'll be this. And today, now that I'm actually doing it, it feels amazing. It gives me a sense of authority, right? It makes me feel accomplished. Okay, and yours? And to sum it up all, like, I don't think I can speak better than Diva here, but if you haven't tried public speaking, if you haven't thought about what's going around you, the time is now. We are living in a closely knit world. There are wars happening everywhere around. We have terrorist attacks. We have so many issues in the world. And until and unless you take up the baton, until and unless you step up, this world will remain where it is. And that's why to everyone, to the lakhs and lakhs of people who are viewing Khabarsamay right now, I tell you this. Talk about issues, be an informed citizen, and at that point of time, you will make the change that you want to see in this world. To sum up this interview, we would like to say, you are a leader. You just don't know it yet. Thank you so much. It was really nice and honor talking to you both. Thank you. So much, ma'am. Likewise. हमारे साथ में फ़िलहाल DPS सिलीगुड़ी के जो प्रिंसिपल मैम है श्रीमती अनीशा शर्मा मौजूद है. हम उनसे ज़रूर बात करना चाहेंगे एंड उनसे जानेंगे कि इस तरीके का नया कॉन्सेप्ट कैसे वह यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आती है. वेलकम टू खबर समय एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. मैम अक्सर ऐसा होता है कि DPS बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आती है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, अलग अलग स्कूल्स का जो कंपटीशन है वो यहाँ पे होता है, साथ ही साथ में अभी नया जो MUN है, मॉडल UN है, वो यहाँ पर आप लेकर आए हैं. इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है अक्सर आपके स्कूल में ये होता रहता है, तो
कैसे आप ये सब कर पाते हैं? मैं कहूँगी कि हमारे जो डायरेक्टर डीपीएस सिलीगुड़ी के मिस्टर शरद अग्रवाल, उनका पूरा आइडिया उनका है। दिन रात टीम के साथ काम किए। हमने आईमन कंडक्ट किया था 2015 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन डीपीएस सिलीगुड़ी, एंड आफ्टर दैट DPS Siliguri MAN is one of its first time that we are conducting. ये पहला ऐसा चैम्पियनशिप और कॉन्फ्रेंस है 2022 में जो किया। 461 डेलीगेट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस। सो मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ बंगाल में और कहीं भी इतने डेलीगेट्स के साथ मन कंडक्ट हुआ। मन हर स्कूल में कंडक्ट होता है, पर इसकी खूबी ये है कि हमारे पास ये इंटरनेशनल लेवल का मान सकते हैं, क्योंकि नेपाल से फरक्कस से भी आए हैं। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने ट्राई किया था, डेलीगेट्स ने, बट ड्यू टू वीज़ा प्रॉब्लम दे कुड नॉट। तो अपने आप में ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा जितने डेलीगेट्स आए हैं डिफरेंट स्कूल्स के। मैम कितने स्कूल्स हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हमारे पास टोटल 11, हमारे डीपीएस सिलीगुड़ी के मिला के टोटल 11 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है। एंड आपने जैसे कि कहा अबव 400 स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, डेलीगेट्स यहाँ पर आए हैं, जो अलग अलग टॉपिक्स को लेकर बात करेंगे, वेलफेयर के बारे में बात करेंगे। तो हाउ दिस काइंड ऑफ इवेंट्स या दिस काइंड ऑफ कमिटी जो है वो इम्प्रूव करता है स्टूडेंट as himself or herself as an individual? See, it's very important for any student. We have so many issues. So talk on that, they speak on that, they research a lot on that. बहुत रिसर्च करनी पड़ती है डीप में। इंटरनेट में बहुत सारा है, पर ये अपने आइडियाज़ उसमें डालते हैं। जितने इश्यूज़ है, चाहे आप कोई सा भी उठा लीजिए, कि अनएम्प्लॉयमेंट आप ले लीजिए, या कौंसिल सिक्योरिटी ले लीजिए, या पीस ले लीजिए, इस तरीके से पॉवर्टी ले लीजिए, क्लाइमेट चेंज ले लीजिए, जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस में बात करने के लिए दी बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर वो है तो वो मॉडल यूनाइटेड नेशंस है। दिस नॉट ओनली एनहेंस देयर नॉलेज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, दे आर एबल टू कम टू अ कंक्लूजन। आपके व्यूज़ अलग हो सकते हैं, मेरे व्यूज़ अलग होते हैं। मॉडल यूनाइटेड नेशन उनको सिखाता है कि वो एक प्लेटफॉर्म में जाके एक कॉमन चीज़ में एग्री करें। कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, पर फिर ये जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, हाउ टू कम अप विद द सॉल्यूशन फॉर दैट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है, जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्रिएटिविटी इज़ वन ऑफ द पार्ट। आप पीछे सामने देख सकते हैं कि ये पूरा जो डीपीएस MAN चैम्पियनशिप का बना है, एक एक हमारे स्टूडेंट्स ने ये किया हुआ है। तो क्रिएटिविटी लीड्स टू एनहेंस देयर नॉलेज। तो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों का इमेजिनेशन, बच्चों की क्रिएटिविटी है, ये एजुकेशन में बहुत हेल्पफुल होती है। तो जितना क्रिएशन इन लोगों ने दिखाया है, हमारे हर बच्चे इसमें इन्वॉल्व रहे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्लासेस, दे डिड अ लॉट। 1 महीने से ज़्यादा इसमें काम चल रहा है और दिन रात की मेहनत होती है। इट्स द हार्ड वर्क, इट्स द पैशन, इट्स द डेडिकेशन। ऑल आवर स्टूडेंट्स, दे हैव कम, आई मीन द डेलीगेट्स एंड द कोर टीम वर्किंग फॉर डीपीएस सिलीगुड़ी MAN, उन लोग डिफरेंट एरियाज़ में एज अ स्टूडेंट दे आर देयर। हमारे एलुमनाई आए हैं हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, और इन एंड अराउंड जितने स्कूल ने पार्टिसिपेट किया है, इवन ऑनलाइन उन लोगों ने नेपाल के डेलीगेट्स के लिए ओरिएंटेशन किया है। यहाँ के लोकल स्कूल जितने पार्टिसिपेट किए उनके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम वॉज कंडक्टेड बाय डीपीएस सिलीगुड़ी alumni as well as the present delegates. So you can imagine the level of work they have done for DPS, and the mind is, and the concept is, and the idea is of course of director सिलीगुड़ी मिस्टर शरद अग्रवाल। पर इसके साथ जो हमारी टीम ने काम किया है, हमारे डीपीएस कोऑर्डिनेटर है मोमिता देवनाथ एंड गोपा गुरुंग, और हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट के, पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो है इस सब्जेक्ट के पार्ट है। तो उसमें इन लोगों ने मेहनत किया, बच्चों को प्रिपेयर किया, और बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हैं। बैंड ने भी खूब तैयारी की। ओपनिंग सेरेमनी वाज माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। कितना अच्छा बच्चे कर सकते हैं, उनका आप देखते हैं लेवल कॉन्फिडेंस का।
तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टार से कम थे वो अपने परफॉर्मेंस में. तो वेदर इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, वेदर आई टॉक अबाउट द प्रिपरेशन फॉर मन एंड द टॉपिक्स दे हैव चोजन, जो डिबेटिंग के लिए जितने टॉपिक्स इन लोगों ने नीति आयोग से लेके, सिक्योरिटी जनरल से लेके, पार्लियामेंट से लेके, बड़े बड़े इश्यूज़ पे जो इन लोग अभी चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और एक जीतना और हारना जो है वो तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. तो दे विल बी रिवॉर्डेड एट द एंड ऑन 12th क्लोजिंग डे में. आप देख रहे हैं यहाँ के सामने राहुल बोस इज़ कमिंग एंड मनमोहन सिंह इज़ कमिंग एंड अनुराग बासु विल बी कमिंग. ऑल दिस स्टार्स आर कमिंग to inspire, to encourage and to reward the students, the winner of DPS Siliguri MAN 2022. मैम अगर बात करें ये इवेंट के बारे में, तो आप हमें ज़रूर बताएं कि कितने दिनों का है ये. ये आज से शुरू होकर 12th इज़ द लास्ट डेट ऑफ इट. तो 3 दिन का हो रहा है, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, 10th, 11th एंड 12th. 12th इज़ द क्लोजिंग डे ऑफ इट. मैम लास्ट आप क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को जो आपको सुन रहे हैं? मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सारे स्कूल जो पार्टिसिपेट किए हैं, उनके प्रिंसिपल, उनके जो मन के कोऑर्डिनेटर है, सबको धन्यवाद देना चाहूँगी. माय हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू ऑल द प्रिंसिपल, टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन DPS सिलीगुड़ी मन चैम्पियनशिप 2022. उनके बिना ये फिजिबल नहीं हो पाता. तो धन्यवाद कहना चाहूँगी. थैंक यू सो मच मैम, इट वॉज़ रियली नाइस टॉकिंग टू यू. एंड जब आप ये लेकर आती है, नए नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आती है, तो सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि बहुत लोग जो आपको देखते हैं, आप उनको भी इंस्पायर करती है. सो थैंक यू सो मच. इट्स माय प्लेजर ऑलवेज. थैंक यू. बता दें कि फ़िलहाल हम खड़े हैं DPS सिलीगुड़ी, जो कि दागापुर में लोकेटेड है. हम यहाँ पे आए हुए थे. इसी के साथ में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से DPS सिलीगुड़ी यानी कि मॉडल UN यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया. साथ ही साथ में किस तरीके से यहाँ पे जो ओपनिंग सेरेमनी है वो किया गया. यहाँ पे कौन चीफ गेस्ट आए हुए थे, चीफ गेस्ट से भी हमने बात किया, हमने स्टूडेंट्स से बात किया, MUN मेंबर्स से बात किया, प्रिंसिपल मैम से बात किया. साथ ही साथ में और तमाम तरीके के जो यहाँ पे परफॉर्मेंस हुए हैं वो हमने आपको दिखाया. ऑल इन ऑल कह सकते हैं कि पूरा ओपनिंग सेरेमनी हमने आपको ज़रूर दिखाया है. एंड इसी के साथ में हम आपको बता दें कि 3 दिनों का जो है ये इवेंट यहाँ पे रखा गया है. बता दें कि DPS यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी MUN यानी कि मॉडल यूनाइटेड नेशंस जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है. चैम्पियनशिप 2022 ये 3 दिनों तक चलेगा. इसी के साथ में हम आपको ज़रूर बता दें कि ये आज, कल और परसों यानी कि 10th, 11th एंड 12th को यहाँ पर होने वाला है. तो इसी के साथ बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबर समय. हर समय खबर